Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Jayo Girivaradhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Jagannath Baladeva Subhadra Maya Sudarshana Jai Jagannatha Baladeva Jai Subhadramaya Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Hari Bol 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna Hare 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 Krishna. So a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naranchayava Narottamam. Devim Saraswati Vyasam. ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So we discussed in the previous session in this second chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam, we are discussing about the pastimes of Lord Krishna as narrated by Lord Krishna to Mahatma Vidur, as narrated by Uddhav to Mahatma Vidur. So Uddhav, who is a pure devotee of Krishna, as we have discussed in the previous sessions also, that because he is a pure devotee of Krishna, he is constantly remembering the pastimes of Lord Krishna and he has become ecstatic, and so much of secrets about Krishna's pastimes is being revealed by Uddhav here. We have seen in this chapter. He is talking about liberation of even demons, liberation of even the people who fought on the battlefield of Kurukshetra. So a lot of secrets are revealed by Uddhav in this chapter. Confidential secrets about Krishna's pastimes are being revealed by Uddhav here in these shlokas of this chapter. And now today also we'll see some supreme secrets revealed by Uddhav. So we'll start today with text 30 of the second chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam. So text 30, shloka number 30. Prayuktan bhoj rajena mainah kama rupinah leelaya vyanudattam stan balah kridana kaniva. Prayuktan bhoj rajena mainah kama rupinah leelaya vyanudattam stan balah kridana kaniva. Translation. The great wizards who were able to assume any form were engaged by the king of Bhoja, Kansa, to kill Krishna. But in the course of his pastimes, the Lord killed them as easily as a child breaks dolls. Now you see what is what is Uddhav is telling Mahatma Vidur. So he's saying Prayuktan Bhoj Rajena. Prayuktan means to engage. Bhoj Rajena, Bhoj Raja. Bhoj means the Bhoj dynasty, and the Raja, the king of Bhoj dynasty, was Kansa. So Prayuktan Bhoj Rajena. So Kans, Mainah Kama Rupinah. He engaged Mainah Kama Rupena. Kama Rupena means Mainah means those who were very powerful living entities in Maya. So he engaged such people, such demons, Kama Rupina, who could assume big forms, or who can assume big ghastly forms like Aghasur or Putana. So such demons could assume
ghastly forms of material nature. So they were engaged by Bhoj Rajena, Kansa, Leelaya Vyanudat Tam Stan. But Krishna, Leelaya, during his Leela, Vyanudat, during his Leelaya, during his pastimes, Krishna killed them. Vyanudat means to kill. So Krishna killed them. Bala Kridan Kaniva, just like a child during his play, he like a child is playing. So Krishna killed all these demons just like play of a child. So these demons were very powerful demons, but Krishna used to kill them as if he's playing with them. You see, that is the position of Krishna. And these demons were not ordinary demons. You see, it's mentioned here in this shloka. Mainah kama rupena. So these demons were Mainah. These demons were very powerful demons who kama rupena, as they would desire, that kind of form they can take. Like Putana, she took the form of a nurse and came to Krishna to feed milk. Similarly, there were demons like Aghasur. Aghasur assumed the form of a huge snake. So many demons were there. Such demons who could assume big forms, ghastly forms. And Krishna, he was a small baby. Just imagine. Krishna was just a small baby. And Krishna killed these demons just like he was playing, like a child is playing with toys. Krishna used to kill them. Krishna used to play with them, these demons. These demons were very serious. They would come to Krishna to kill him. But Krishna would kill them just like he's playing with them. You see? Just like a child, he plays with toys and sometimes he just breaks the toys. So Krishna used to play like that with these demons. So Kans would devise and he would engage lot of demons. One by one, he would keep sending demons to kill Krishna. And Krishna continuously, one by one, he would kill all these demons. Just like a toy is broken by a small baby. So that's why Krishna in the Bhagavad Gita, he says, Janma karma chame divyam. So the Lord is Lord under all conditions. God never becomes God. God never becomes God. It's not that someone can undergo tapasya, someone goes to the forest, engages in austerity and he becomes God. No, God never becomes God. God is God under all circumstances. Krishna, even when he was a small baby, he was God. And even when he was the chariot driver of Arjuna in the battle of Kurukshetra, still he was God. While playing with Mother Yashoda, he was God. While engaging with the gopis, dancing with the gopis, he was God. While talking to his wives in Dwarka, he was God. So God is God under all circumstances. It's not that God becomes God by some mystic power or some mystic tapasya or austerity. No. So even while he was playing as a small child, a small baby, still his position remained the same. So material body cannot limit God. An ordinary person is limited by his material body. When we are a small babies, we cannot do many things. When we grow old, we can do many things. And when we become old also, we cannot do many things. So during youthhood, you can do many things, but during childhood and during old age, you cannot do many things. Krishna is not like that. Even while he was a small baby, small child, still he was doing wonderful acts. And even when he grew old, he never became old. He never had, that was the special feature of Krishna's pastimes, or even Lord Ram's pastimes, or even any of the pastimes of the Lord, that
the Lord never becomes old. You'll never see Krishna having gray hair and gray beard and all that. No. Although he lived for 125 years. From childhood, he became young. He came to youthhood. Till 16-year-old, Krishna grew into a full matured, blossoming youth, blossoming young boy, like a 16-year-old boy. But after 16 years of age, he never grew old. Even when he was present in the battle of Kurukshetra, according to material estimation, his age was around 100 years, more than 100 years, because he had children, he had grandchildren. But he looked exactly like a 16-year-old boy. So that is Krishna. He never grows old. So Krishna is not limited by the body. We are limited by the body, condition of the body. We are all limited. But Krishna is not. There is no limit towards Krishna's pastimes. So God never becomes God. God is God. Whether he is in the battle of Kurukshetra or whether he is on the lap of Mother Yashoda, whether he is a boy dancing with the gopis in Vrindavan or whether he is playing with his grandchildren in Dwarka. Under all conditions, God is God. He never becomes God. Now text 31, shloka number 31. Vipannan vishapanena nigrihya bhujagadhipam उत्थाप्यापाय यद गावस तत्तोयं प्रकृतिस्थितम् विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद गावस तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्. Translation. The inhabitants of Vrindavan were perplexed by great difficulties because of a certain portion of the Yamuna was poisoned by the chief of the reptiles, Kaliya. The Lord chastised the snake king within the water and drove him away. And after coming out of the river, he caused the cows to drink the water and proved that the water was again in its natural state. Now you see, what is Uddhav saying here? So Uddhav is saying that Vipannan Vishapanena. Vipannan. Vipatti, Vipannan. Different kinds of miseries were there. Vishapanena. When Vishapanena, poison, Vish means poison. Nigrihya Bhujagadhipam. So the river Yamuna became poisoned by Bhujaga. So Bhujaga means snake. And Adhipam means the king among snakes. Very powerful snake. So that was Kaliya snake. Utthapya payayad gavas tattoyam prakriti sthitam. So Utthapya payayad gavas. Gavas means cows. So Krishna first chastised Kaliya, and then when he came out of the river Yamuna, he somehow drove the cows to drink the water of Yamuna, so that everyone could believe that now the poisonous effect of Yamuna river is gone. So this is a beautiful pastime of Lord Krishna. We will see in the 10th canto that when Krishna was living in Vrindavan, so at that time there was a demonic snake called Kaliya. He entered into the river Yamuna. And because he entered into river Yamuna, the water of Yamuna became very poisonous. And that is why anyone who would drink the water of Yamuna, because the water of Yamuna used to feed everyone in Vrindavan.
So the cows, the animals, and even human beings, they started to suffer because of that, the poisonous water of Yamuna. So then Krishna, he entered the river of, entered the water of river Yamuna, and he danced, he started dancing on the hoods of Kalia. So Kalia was a snake who had many hoods. So Krishna started dancing on the hoods of Kalia. And Kalia was feeling as if someone is hitting him very hard. And Kalia then started oozing out blood from its mouth. And Krishna was about to kill the snake Kalia, but the wives of Kalia, they are called Nagapatnis. So the wives of Kalia, they appeared on the scene and they prayed to Lord Krishna that please excuse our husbands. And Krishna then excused Kalia. He did not kill Kalia, but he completely made Kalia powerless. So basically, he subdued Kalia and told Kalia to leave river Yamuna. But Kalia started living in Yamuna because he was in fear of Garud Dev. Why Kalia came to Yamuna? Because he knew that Garud Dev cannot enter the tract of land of Braj Mandal. Because Garud Dev was cursed by a saintly person that you cannot enter this area of Braj Mandal. So Kalia, fearing Garud Dev, he entered Vrindavan because Kalia knew that Garud Dev cannot enter Vrindavan. So Kalia was completely subdued by Krishna, and Krishna told Kalia to go away from Vrindavan. So then again Garud Dev would kill Kalia. So Krishna told Kalia that no, Garud Dev will not do anything to you. Why? Because I have danced on your hoods, and on your hoods the imprint of my lotus feet is there. So when Garud Dev would see the imprint of my lotus feet on your hoods, he would not harm you. And that's when Kalia retracted from Vrindavan and he went away from river Yamuna, and he never came back. So that's why Krishna is called as Vrajajana Palana Surukula Nashan. He loves his devotees, especially Vrajvasis, and he can do anything for them. And he is the killer of Asuras, he is the killer of demons. It's a very beautiful pastime of Krishna and Kalia. Now text 32, shloka number 32. Ayajayad go savena गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः. Translation. The Supreme Lord Krishna desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of the cows, and also he wanted to give a lesson to Indra, the king of heaven. Thus he advised his father to perform worship of Go, or the pasturing land, and the cows with the help of learned Brahmanas. Now you see, Ayajayad Go Savena. So Krishna engaged Go Savena, people of Vrindavan, to worship cows. Goparajam Vijottamay. Goparajam means Nand Maharaj, who was the king of the cowherdmen of Vrindavan. So he was the king of Braj Mandal, or king of the cowherdmen of Vrindavan, Nand Maharaj. Vijottama and Brahmanas. So Krishna engaged Goparajam means Nand Maharaj and Dvijottama. Dvijottama means Brahmanas
Dvija Uttama, who are highest among Dvijas, they are called Brahmanas. So Krishna engaged all of them, all the Brahmanas and Nanda Maharaj, Ayaj Go Savena, to engage in worship of the cows and the hill Govardhan hill. Vittasya Choru Bharasya, Vittasya Cha Uru Bharas. And why he did that? Because he wanted to, Vitta means money, wealth. So he wanted to engage the wealth and opulence of Vrindavan or Nand Maharaj, to engage it in service of cows and Govardhan hill. Chikirshan Sad Vyayam Vibhu. And in this way, he taught everyone how to engage our wealth in service of the Lord and the worship of the cows and Giri Govardhan hill. You see, so Krishna being the chief amongst all the living entities, or being the teacher of everyone, he gave lesson even to Nand Maharaj, who was his father. He gave lesson to Nand Maharaj and all the Vrajvasis, all the inhabitants of Vrindavan. He taught them by his practical, by his acts, he taught them. Because every year, the inhabitants of Vrindavan, along with Nand Maharaj, they would worship Indradev. Indradev, Lord Indra, is the demigod of rain. So they would worship Indra every year so that he could give them rain, because they were all farmers and they were dependent on rain for vegetation and crops. So they were used to worship Lord Indra. And it is also advised in the Vedic scriptures that we can worship demigods, because otherwise, if a person, because not everyone will worship Supreme Lord, because most of the people are envious of Krishna. So those who are envious of Krishna, and they have who are envious of Krishna? Who are non-devotees. And non-devotees, generally, they have a lot of material desires. So those who have material desires, they are recommended to worship demigods. Why? Because if they worship demigods, they will, at least, because you see, the greatest danger in human society is that we become proud that I am doing everything, which is called ahankar, pride. So that is why those people who cannot worship the Supreme Lord, because Supreme Lord can only be worshipped by those who are devotees, who have piety of their many lifetimes. Only they can worship Krishna. So not everyone will worship Krishna, but everyone has material desires. So to save people from this attitude of doership, that I have done everything, I have created, I have worked hard, I have earned money, aham. So to save people from this mentality of pride, it is recommended to worship demigods. Why? Because people have material desires. So at least if they go to demigods, they will know that I am not the doer. So to save people from doership, sometimes in the Vedic scriptures, it is recommended that you worship demigods. But that is for less intelligent people. It is mentioned in the Bhagavad Gita that Tad Bhavatyalpa Medhasam. Krishna says in the Bhagavad Gita that those who worship demigods, in the 7th chapter, Krishna talks about it, that those who worship demigods, they are less intelligent. Antavattu phalam tesham tadbhavatyalpa medhasam. Because the benediction given by demigods is always temporary and material.
So those who worship demigods, they are less intelligent people. So most of the people are less intelligent. So that's why they worship demigods. But what happens is at least they develop an attitude of surrender. And gradually, after many, many lifetimes, finally they come to Krishna consciousness. After many births and deaths, they finally come to Krishna consciousness. But to worship Krishna directly is the shortcut to go back to Krishna. So Krishna, he discouraged the inhabitants of Vrindavan that don't worship Indra, you worship Govardhan, and you worship the cows, and you worship me. So Govardhan means he is considered to be a form of Lord Krishna only. Krishna entered Govardhan and he told everyone that you worship me as Govardhan. So that's why even till today, all the devotees who go to Vrindavan, they worship Govardhan by circumambulating Govardhan. And Govardhan also is famous for cows. Go means cows also. So all the devotees of Krishna, they worship cows and they worship Govardhan. So Krishna taught by practical example that by all our activities, by all our wealth, we should worship Krishna. Yat karoshi yot juhoshi yat ashnasi dadasi yat tapasyasi kauntya tat kurushva mad arpanam. Whatever you do, whatever you earn, whatever you do tapasya, whatever austerities you perform, everything must be offered to me. And that's what Krishna taught all the inhabitants of Vrindavan. And all of you, by all your activities, you worship the Supreme Lord. Or you worship me, because he told them to worship Govardhan. And worship of the cows, because cows are very dear to Krishna. So, dharma swanushthitah punsam vishwaksen kathasu yah notpati yadi ratim shram ev hi kevalam. So dharma swanushthita punsam, the highest occupational duty of a human being, savaya punsam paro dharmo yato bhakti radhokshaje. The highest occupational activity of a human being is to worship Krishna by all one's activities. That is the perfection of human life. To worship Krishna by all of our activities, that is the supreme duty of every living entity. And if a person can do that, his human life becomes perfect. All his occupational duties should be directed towards worship of Krishna. And Krishna is teaching that to everyone through this pastime of Govardhan and Indra. So Krishna, he told the Vrindavan Vasis not to worship Indra and worship Govardhan. Indra became angry and he tried to subdue or he tried to submerge Vrindavan by rainfall, by incessant rainfall. But Krishna punished Indradev and showed the position to Indradev also, that you are not everything, you are not supreme. Sometimes what happens is, because in the Vedas it is prescribed that you can worship demigods. So people worship demigods sometimes. And by this worship, the demigods sometimes become proud of their position. Oh, I am being worshipped, so I am great. So sometimes they start thinking that I'm very special, or I am God, something like that, Even demigod, they become proud of their position sometimes. So Krishna, when he descended on earth, not only that you see through one pastime how many messages Krishna is passing on to all of us. So first thing, he told everyone, he showed by practical example that all of us should worship Krishna by all our activities. We should worship Krishna and give protection to the cows, right? And the Brahmanas. And Krishna is also showing through this pastime
that there is no need to worship demigods. And third, he is also, by punishing Indra, he's telling all the demigods that don't become puffed up of your position. You're all doing your duty. You should not think that you have become God. So he is not only that, he is showing, he is displaying a good example, or he's teaching not only human being, but he's giving his teachings through his pastime. He's passing on the message even to demigods, not only human beings, but he's passing on the message to upper planetary systems also, that I am the Supreme Lord and I have to be worshipped by everyone, not you. You see? So that is Krishna. That is the past. These are the pastimes of Krishna revealed by Uddhav here. So today we'll stop little early. I have some work to do. So we'll stop here. You can like the video, you can comment. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। और प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में ये जो अध्याय है भगवत गीता का भागवत का तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय जो हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उद्धव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और भाव विभोर हो चुके हैं, और किस प्रकार बड़े ही गूढ़ रहस्य कृष्ण की लीलाओं के वो अ, यहाँ पर बता रहे हैं हम सभी को। जो रहस्य सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही पता होता है, इस तरह के बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान की कृष्ण की लीलाओं से वो बता रहे हैं। और ये लीलाओं का स्मरण करके वो भाव विभोर होते जा रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण के कृष्ण के वध करने के बाद दानव भी उन्हें भी मोक्ष मिल जा रहा है, और कुरुक्षेत्र में जो लोग हैं उनकी मृत्यु क्योंकि कृष्ण को दर्शन करते हुए हो रही है।
तो उन्हें भी वैकुंठ धाम का निवास मिल जा रहा है। तो ये सारे जो रहस्य हैं, अद्भुत रहस्य उन्होंने हम सबको बताए हैं उद्धव जी ने। और अब हम आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे 30वें श्लोक से। 30वां श्लोक। प्रयुक्तान भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। Translation, अनुवाद। The great wizards who were able to assume any form were engaged by the king of Bhoja Kansa to kill Krishna, but in the course of his pastimes, the Lord killed them as easily as a child breaks dolls. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो उद्धव जी यहाँ पर महात्मा विदुर से कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े दानव थे, जो कोई भी रूप ले सकते थे, कंस ने उनको लगाया था भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अपनी लीलाओं के समय कृष्णा उन्हें ऐसे मार रहे थे जैसे बच्चा खेल रहा हो। अब आप देखिए, प्रयुक्तान भोजराजेन। प्रयुक्तान का मतलब होता है लगाना, उसको लगा देना किसी चीज में। भोजराजेन, भोजराजेन कौन है? भोज राज्य का जो राजा था कंस। माइनः काम रूपिणः, और ये जो कंस बहुत सारे दानवों को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजता था, लगाता था। काम रूपिण माइनः, जो बड़े ही माया के अलग अलग रूप जो लोग ले सकते थे। माइनः काम रूपिण, काम रूपिण मतलब जो उनकी इच्छा थी, ये राजा लोग वैसा रूप, ये दानव लोग वैसा रूप ले सकते थे जैसी उनकी इच्छा होती थी। इच्छा रूप, इच्छा के अनुसार अपना रूप ले सकते थे। तो लीलया व्यनुदत्त तामस्तान, लीलया, तो अपनी लीला के दौरान, अपनी लीला के समय, व्यनुदत्त तामस्तान, व्यनुदत्त मतलब उन्होंने, कृष्णा ने उनको मार दिया, उनका वध किया, उन सभी का। बालह क्रीडन का, क्रीडन का मतलब खेलने, खेलना, क्रीड़ा करना। तो जैसे बाल, बालक मतलब बच्चा, तो बच्चा जैसे खेल रहा होता है, कृष्णा वैसे उनके साथ खेल रहे होते थे और खेल खेल में उनको मार देते थे। अब आप देखिए उद्धव जी क्या कह रहे हैं। तो कंस जो था वो बड़े बड़े दानवों को भेजता था वृंदावन कृष्णा को मारने के लिए। और ये दानव लोग कोई साधारण दानव नहीं थे। पूतना, अरिष्टासुर, अघासुर, ये लोग कोई भी रूप धारण कर सकते थे। पूतना, जैसा हमने देखा अपने पिछले सत्र में भी, तो वो भगवान के, वो एक एक सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी भगवान को दूध पिलाने के लिए। जो अघासुर नाम का राक्षस था, उसने सांप का रूप लिया था कृष्णा को मारने के लिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो लोग थे, दानव, उन्हें कंस जो था वो भेजता था, उन्हें लगाता था कृष्णा को मारने के लिए। तो लीलया वेणुदत्ताम था। और आप सोचिए, वो इतने बड़े बड़े दानव राक्षस, इतने बड़े बड़े दानव और राक्षस, इतने बड़े बड़े दानव और राक्षस, उन्हें कृष्णा ऐसे मारते थे जैसे बच्चे खेल रहे होते। खेल खेल में बच्चे से खिलौना तोड़ देते, वैसे भगवान इन दानवों को तोड़ देते थे
खेलते हुए। तो वो दानव तो बड़े प्रयोजन बना के आते थे, बड़ा प्लानिंग करके आते थे कि आज कृष्णा को मारना है, मैं ये रूप ले लेता हूँ। पूतना जहर लगा के आई अपने स्तन में। जो अघासुर था वो इतना बड़ा सांप बन के आया और अपना मुंह खोल के बैठा हुआ था। तो ये लोग इतने सारे पूरा प्रयोजन बना के आते थे और कृष्णा इनके साथ खेलते थे। जैसे बच्चे खेल खेल में खिलौना तोड़ देते हैं, वैसे कृष्णा इनको तोड़ देते थे, इनको मार देते थे। तो ये सब भगवान के, कृष्णा के हाथ में ये सब खिलौने जैसे थे। इतने बड़े बड़े दानव कृष्णा के खिलौने थे। तो तो कृष्णा चाहे जब 3 महीने के छोटे बच्चे थे यशोदा मैया के गोद में, या फिर कृष्णा जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में थे, कृष्णा कभी भगवान बने नहीं। भगवान कभी भगवान बनते नहीं, भगवान होते हैं। कोई भगवान बनता नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई तपस्या करके भगवान बन जाता है, योग विद्या योगा करके भगवान बन गए, नहीं। कोई भगवान बन नहीं सकता, भगवान होते हैं, अवतार लेते हैं। कृष्णा जब 3 महीने के थे तो भी वही थे, और जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो भी वही थे। उनकी शक्ति वही थी। हम सब अपनी शक्तियों, हमारी जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। जब हम 3 महीने के छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी शक्ति सीमित हो जाती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो भी शक्ति सीमित हो जाती है। जब हम यौवनावस्था में होते हैं तो शक्ति अधिक होती है। लेकिन कृष्णा को देखिए आप, वो 3 महीने के छोटे बच्चे थे तो पूतना को मार दिया, और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे वहां भी विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। तो कृष्णा चाहे छोटे बच्चे हो 3 महीने के, या 100 साल के, जब पूरे 100 साल के हों, क्योंकि भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वो थे, तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम उनकी आयु को अगर निकाले तो लगभग 100 साल की आयु आती है। क्योंकि उस समय उनके पुत्र पोते सब कुछ थे। तो लगभग 100 साल की आयु थी कृष्णा की जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि कृष्णा जब छोटे 3 महीने के थे तब से लेकर वो जब तक 16 साल के हुए तब तक तो वो यौवनावस्था में आए, तब तक वो बढ़े, उनका उनकी जो आयु है बढ़ी। लेकिन 16 साल के बाद से कृष्णा कुल 125 साल रहे पृथ्वी पर, लेकिन 16 साल के एक सुंदर युवा जैसा ही रूप उनका उसके बाद रहा। 16 साल के बाद कृष्णा का रूप बदला ही नहीं। तो कृष्णा जब 3 महीने के बच्चे थे, या फिर जब गोपियों के साथ नाच रहे थे, रासलीला कर रहे थे, या फिर जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, या फिर जब द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, कृष्णा जिस भी समय हो वो भगवान थे। भगवान भगवान बनते नहीं है, कोई भगवान बन नहीं सकता। वो हर अवस्था में भगवान थे। तो कोई भी तपस्या करके योग का योग विद्या का जान के या पढ़ लिख के कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान हर अवस्था में भगवान होते हैं, चाहे वो 3 महीने के बच्चे हों यशोदा मैया की गोद में, या फिर वो 100 साल के व्यक्ति हों कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हर अवस्था में भगवान थे, और उनकी लीलाएं अद्भुत। दानवों को ऐसे मारते थे जैसे खिलौना के साथ खेल रहे हों वो। 31वां श्लोक। विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावस् तत्तोऽयं प्रकृति स्थितम्।
विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम् उत्थाप्यापाय यद्गावस् तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम्। Translation: The inhabitants of Vrindavan were perplexed by great difficulties because a certain portion of the Yamuna was poisoned by the chief of the reptiles, Kaliya. The Lord chastised the snake king within the water and drove him away. And after coming out of the river, he caused the cows to drink the water and proved that the water was again in its natural state. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो उद्धव जी कह रहे हैं महात्मा विदुर से, वृंदावन के जो निवासी थे वो बड़े ही दुखी थे, क्योंकि यमुना का जो पानी था वो विषैला हो गया था। कालिया जो नागों का राजा था, उसके यमुना में आने से, तो कृष्णा ने कालिया का दमन किया, उसको यमुना से भगाया। और उसके बाद जब वो नदी से बाहर आए तो उन्होंने गायों को पानी पिलाया और सबको दिखाया कि अब इसका विष जो है वो नष्ट हो चुका है नदी का, और नदी अब वापस से अपने वास्तविक अवस्था में आ चुकी है। अब आप देखिए, तो विपन्नान विषपानेन, विपन्नान बड़ी ही विपत्ति, विपन्नान का मतलब बहुत ही विपत्ति आ गई। क्योंकि विपन्नान विष पाने न, विष पाने, क्योंकि विष जो पीने पीने के कारण बहुत विपत्ति आ गई थी वृंदावन में, वृंदावन के निवासियों में। तो कृष्णा ने निगृह्य भुजगाधिपम, भुजगा मतलब राजा, सांपों, और अधिपम मतलब राजा, तो सांपों का राजा, नागों का राजा कौन था? कालिया। तो उत्थाप्या पाययद गावस, तो पहले तो निगृह्य, उसे उसका दमन किया, और फिर उत्थाप्या पाययद, उसके बाद जब वो बाहर आए यमुना नदी से, तो गावस गायों को, तत्तोयम उनको पानी पिला के, प्रकृति स्थम ब्रजवासियों को बताया कि देखो अब ये वापस से यमुना शुद्ध हो चुकी। तो जैसा हम सब जानते हैं, बहुत ही सुंदर लीला है कृष्ण भगवान की। जब कालिया का दमन किया उन्होंने, तो कालिया एक बड़ा ही विषैला, बहुत ही विष भरा हुआ सांप था, और वो यमुना में आके रहने लगा। वो गरुड़ देव के डर से आके यमुना में रहने लग गया, क्योंकि गरुड़ देव उसको मारने की इच्छा थी गरुड़ देव। तो गरुड़ देव से डर के कालिया जो है वो, उसने वृंदावन में आके रहने लग गया था, क्योंकि गरुड़ देव को श्राप दिया था एक ऋषि ने कि वो ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर सकते यमुना में। तो इस कारण कालिया को लगा कि यहाँ पे तो गरुड़ देव नहीं आ सकते, तो वहां रहने लगा। लेकिन उसके रहने के कारण यमुना का जो पानी था वो बहुत विष से भर गया, विषैला हो गया। अब जब विष से भर गया तो ब्रजवासियों को बहुत विपदा आ गई उनके ऊपर। तो कृष्णा नदी में प्रवेश किया उन्होंने, और नदी में प्रवेश करके उन्होंने वो कालिया के सर के ऊपर नाचने लग गए। कालिया के जो फन थे, कई सारे फन थे, तो कालिया के फन के ऊपर कृष्णा नाचने लगे। वो कालिया उनको मारने जा रहा है और कृष्णा उस पे नाच रहे हैं, और नाचते 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 नाचते, और कालिया जो था, अब कृष्णा तो नाच रहे थे उसके ऊपर, कालिया को ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मार रहा है बहुत जोर जोर से, और उसे खून की उल्टियां होने लगी, उसे खून आने लगा उसके मुंह से। और कृष्णा उसको मारने ही जा रहे थे,
लेकिन तभी जो नाग पत्नियां हैं, यानी उसकी जो पत्नियां हैं, वो आ गई और उन्होंने प्रार्थना किया कृष्णा से कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। तब कृष्णा ने उसे बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, दिखना मत इधर, तुम वृंदावन में कभी मत आना। और कृष्णा को पता था कि वो गरुड़ देव के डर से यहाँ रह रहा है, तो वो वापस अगर बाहर जाएगा तो गरुड़ देव से उसको खतरा है। तो कृष्णा ने बोला कि क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पे नाचा है, तो मेरे चरण कमल का जो इम्प्रेशन है, मेरे चरण कमल छप गए हैं तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे फनों के ऊपर। और इसीलिए गरुड़ देव जो हैं वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे फनों के ऊपर चरण कमलों का मेरे चरण कमलों की निशानी, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। तो आप देखिए, एक ही लीला से कृष्णा क्या क्या कर रहे हैं। और उसके बाद सारे ब्रजवासियों को दिखाया, गायों को बोला ये जल पियो यमुना को। और यमुना का जल जब गाय पी पी रही थी, तो सबको पता लग गया कि अब ये जो यमुना का पानी है वो विष अब उसका नष्ट हो गया है। तो इसीलिए कृष्णा को कहते हैं ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। ब्रज के वो पालन करता है, ब्रज वासियों से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकते, और असुरों का विनाश करते हैं अपने भक्तों के लिए। 32वां श्लोक। अयाजयद गो सवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। अयाजयद गो सवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The Supreme Lord Krishna desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of the cows, and also he wanted to give a lesson to Indra, the king of heaven. Thus he advised his father to perform worship of the go, or the pasturing land, and the cow with the help of the learned Brahmanas. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी और नंद महाराज का जो धन था, उसे गोवर्धन और गो की सेवा में प्रयोग करना चाहते थे, और इंद्र को सही आ, सही ज्ञान देना चाहते थे, उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को गोवर्धन और गायों की सेवा करने के लिए कहा, ब्राह्मणों के सहायता से। अब आप देखिए, आया जयद गो सवेन, गो सवेन मतलब गौ की सेवा, गौ माता, गायों की सेवा। अया जयद, अया जयद मतलब पूजा करना या लगाना। गोप राजम, गोप मतलब जो ग्वाले थे, उनके राजा कौन थे? नंद महाराज। गोप राजम द्विजोत्तम है, तो गोप राज यानी नंद महाराज और द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम का मतलब जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों और नंद महाराज को उन्होंने लगाया किसमें? गो सवेना, गोवर्धन और गौ माता की सेवा में। वित्तस्य चौरुभारस्य, और उनका जो वित्त था, वित्त मतलब धन, उसे उसे गोवर्धन और गायों की सेवा में लगाया। चिकीर्षम सद्वयम विभु, और इस तरह से ऐसे कर्म करके उन्होंने सबके सामने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार हम विभु कृष्णा की सेवा के लिए हमें अपना सब कुछ का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए,
जैसा हम सब जानते हैं, बहुत ही सुंदर लीला है कृष्णा की, जिसमें उन्होंने एक ही लीला से कितने सारे संदेश दिए पूरे मनुष्य योनि को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को। उन्होंने एक ही लीला से सारे अद्भुत उपदेश दिए और कितना सारा उन्होंने ज्ञान दे दिया एक लीला से। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, तो जो ब्रजवासी थे वो हर साल इंद्र देव की पूजा करते थे। अब जो इंद्र देव हैं वो देवता हैं, और शास्त्रों में भी, वेदों में भी कई जगह पे देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है। वैसे कहा गया है कि उसकी आवश्यकता नहीं है यदि आप भगवान की यानी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो विष्णु की भक्ति कर रहे हैं तो। लेकिन विधान क्यों दिया गया है? क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति तो, जो कृष्ण भगवान बताते हैं भगवत गीता में, कि जो सबसे शुद्ध लोग हैं, जो कई जन्मों से जिनका पुण्य बड़ा है, बना हुआ है, वही लोग कृष्ण की भक्ति में आ सकते हैं। मुख्यतः तो लोग जो हैं वो कृष्ण भक्ति में आएंगे नहीं। तो उनके लिए, और सब, और कृष्ण भक्ति में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक हैं। तो जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक हैं और कृष्ण भक्ति में आ नहीं सकते, तो उनके लिए विधान है कि आप देवी देवताओं की पूजा कीजिए। वो किस लिए है? ताकि मनुष्य के अंदर कम से कम थोड़ा समर्पण भाव तो आए, और ये न रहे कि सब कुछ मैं ही कर, जो कर्ता का भाव है वो न रहे कि मैं हूं करने वाला, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ऐसा ना हो, तो अहंकार न आए। तो कम से कम वो देवी देवता की पूजा करेगा, अहंकार नहीं रहेगा उसके अंदर। क्योंकि अहंकार तो सबसे बुरी चीज बताई गई है। तो अहंकार से बच जाएगा वो, और इस तरह से कई जन्मों तक वो इस तरह से अगर करेगा, तो अंत में अगर उसका सौभाग्य हुआ तो वो कृष्ण की सेवा में लग जाएगा कई जन्मों के बाद। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के विधि विधान से, और भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, वो लोग अल्प बुद्धयः, वो लोग अल्प बुद्धि हैं। अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले। तो अब कृष्णा ये भी कहते हैं भगवत गीता में कि अंतवत तो फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम, कि अंतवत जो उनके द्वारा जो फल दिया जाता है देवी देवताओं के द्वारा, वो सदा हमेशा अंतवत, वो हमेशा नश्वर होगा और जड़ होगा। तो इसीलिए जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग कम बुद्धिमान लोग, उन्हें कहा गया अल्प बुद्ध है, उनकी बुद्धि कम है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने यहाँ पर ब्रजवासियों को कहा, वृंदावन वासियों को, नंद महाराज को कहा, ब्राह्मणों को कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं? और कृष्णा ने कहा कि आप लोग इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन और गायों की पूजा कीजिए। अपना जो भी धन है उससे आप उनकी पूजा कीजिए। तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र को क्रोध आ गया तो वो वर्षा करने लगे, ब्रजवासी परेशान होने लगे। तो कृष्णा तो ब्रजवासियों को दुखी देख नहीं सकते, तो उन्होंने गोवर्धन उठा लिया और इंद्र को दंड दंड दिया। तो इससे आप देखिए, इंद्र को दंड देने से क्या कृष्णा दिखा रहे हैं? तो होता क्या है कि जब देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं तो देवी देवताओं को घमंड आ जाता है कि हम भगवान हो गए। तो इंद्र के माध्यम से पूरे पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश दे दिया, तुम लोग ज्यादा अहंकार में मत आना,
तुम्हारी पूजा मेरी वजह से हो रही है। तो पहले तो ये संदेश दे दिया सारे पूरे ब्रह्मांड में। तो कृष्णा कोई पृथ्वी के देवता थोड़ी है, पूरे ब्रह्मांड के भगवान है। तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड को संदेश दे दिया कि अपने आप अपने हद में रहो। और सारे ब्रजवासियों को और हम सबको, पूरे मनुष्य जाति को ये ज्ञान दिया कि हमें अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना है। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे कृष्णा की सेवा में लगाओ। और कहा कि किसी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम मेरे भक्त हो तो मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सारे बंधनों से और सारे बुराइयों से मुक्त कर दूंगा। कोई तुम्हें किसी की पूजा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार कृष्णा देखिए एक ही लीला से कितने सारे संदेश दे दिए उन्होंने। पहले तो पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं को संदेश दे दिया, फिर मनुष्य योनि को संदेश दे दिया कि जो कुछ भी हमारे पास है उससे हमें कृष्णा की सेवा करनी है। और तीसरा कि देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो इसीलिए कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, कि कोई भी मनुष्य हो उसका सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण भक्ति। अपना सब कुछ उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का की पराकाष्ठा है, यही परफेक्शन है, यही सिद्धि है मनुष्य जीवन की, यदि हम सब कुछ से भगवान की सेवा कर सकें, कृष्णा की सेवा कर सकें। तो आज थोड़ा हम सत्र पहले समाप्त करेंगे, कुछ काम है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।